Generally, we go through the news that share market collapsed and FDI अपना पूरा पैसा लेके चला गया. What exactly this FDI is? ये क्यों चला गया? ये जाने से क्या हुआ? So many questions we have. But the most important question is कि ये FDI आता क्या है? It is foreign direct investment. ये है क्या? ये है कुछ ऐसी चीजें या ऐसे यूनिट्स या ऐसे रास्ते जहां से फॉरेन से पैसा इंडिया में आता है. तो ये कैसे आता होगा एग्जैक्टली? व्हाट आर द फॉर्मल वेज टू दैट द फॉरेक्स कम्स इनटू द मार्केट, या हमारा पैसा बाहर जाता है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन यूनिट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 4. चैप्टर 4, as we know, is international trade. We are dealing with the transactions between two or more countries, in which unit number 5 is international capital movement. International, that means between the countries. Capital, paisa, movement, how it flows. So let's see what exactly is given in this chapter. International capital movement. The chapter deals with two questions. Why the capital move from across the national boundaries? पैसा जाता ही क्यों है बाहर? इंडिया वाला आदमी बाहर इन्वेस्ट क्यों करेगा? इंडिया में कर लो ना भाई, या बाहर वाला इंडिया में क्यों करेगा? Second, what are the consequences of such capital movement? Is it good or bad? Let's see in detail. First, what is foreign capital? As we are talking about movement of foreign capital, we must know what exactly foreign capital is. It's an inflow of capital from abroad to home country. बाहर से आने वाला पैसा इधर, and vice versa also. But for us, foreign capital means बाहर से आने वाला पैसा. It can be in 4 different forms. First, bilateral or direct inter-government grants. किसी और गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया, या हमारे गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया था, इसलिए अभी हमें भी मिल रहा है. Like IMF gave some funds to Indian projects. Multilateral aid from in many governments who pool funds to international organizations like the World Bank. World Bank में बहुत सारे कंट्रीज ने पैसा रखा है, उसमें से कुछ पैसा हमारे देश में आया for some projects. Tied aid with strict mandates regarding the use of money, or untied aid where there is no such stipulation. Tied aid means मदद, जो पैसा हमें मिला है लेकिन कंडीशनल है कि इसी चीज के लिए यूज होगा, और अनटाइड कि जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, जस्ट फंड्स गिवन. Foreign grants which are voluntary transfer of resources by governments, institutions, agencies or organizations. Grants are received which are given as a gift to our country or to the manufacturer or traders by the foreign government or foreign institution. So these are 4 sources जहां से पैसा इंडिया में आ सकता है. Second, in first trading. Second, borrowings, हम लोग लोन लेते हैं, उसमें भी तो पैसा आ सकता है. डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट को लोन दिया. लाइक just now the governments or at international level, one country gives loan to the other government for some infrastructure facilities. Nowadays it is increasing. That is first. Loan from international institutions, for example World Bank, IMF, etc. Soft loans from, for example, from affiliates of World Bank such as IDA. Such kind of organizations are there which gives funds on behalf of IMF, International Monetary Fund, or World Bank. External commercial borrowings, हम जो लोन लेते हैं, like from US Bank I took a loan in dollar terms. Trade credit facilities like creditors, मैंने US से माल लिया, they are my creditors, तो वहां पे भी पैसा फ्लो हो सकता है, या मैंने किसी को क्रेडिट में बेचा, अल्टीमेटली आई विल गेट द अमाउंट. ये ट्रेड लोन्स भी मिलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम यूएस बैंक, लाइक दिस. Deposit from non-resident Indian, NRIs. Many times the Prime Minister or President of a country gives a call to NRI that you must invest in our country, come back to our country. So deposits given by NRI, of course these are refundable, but the amount comes in our country. Investments in the form of foreign portfolio investment that we are going to learn in detail. In bonds, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट जो करते हैं, stock, securities, foreign direct investment in industrial, commercial and similar other enterprises. What is difference between FPI, FDI? We are going to discuss. But बाहर वाले लोग जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, that is again a source of amount coming into India. A detailed discussion about all types of capital is beyond the scope of this unit. Therefore, we shall concentrate only on foreign investment. ये सारे बाकी जो है borrowings है, government grants है, government internal loan, this is not covered by this unit. We are going to discuss FDI, FPI, etc. तो जो इन्वेस्टमेंट होती है, बाहर वाले लोग जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, that is the only area which is covered by this unit.
So let's discuss it in detail. First is FDI, foreign direct investment. An investment made by the investors of a specific country called as home country in the shares etc. of the company of the other country called as host country. यूएस के किसी ने अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, इन दैट केस यूएस इज अ होम कंट्री फॉर दैट पर्सन एंड इंडिया विल बी द होस्ट कंट्री. ये जो इन्वेस्टमेंट है कॉल्ड एज एफडीआई. जनरली व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज 10% और अबव ऑफ द वोटिंग राइट्स देन इट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज assumed to be a long term investment. जनरली वो आदमी जो इन्वेस्ट कर रहा है 10% और मोर ऑफ द शेयर्स, वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स of the other company, so he is interested to keep it for a long run. That is what is an assumption called as FDI. The investor can be an individual company or any type of investor. The FDI can be horizontal, vertical, conglomerate or two-way direct foreign investment. कैसे कैसे FDI हो सकता है देखते हैं. Horizontal FDI, मैंने पैसा डाला, क्यों डाला? When the investor establishes the same type of business operation in foreign country as it operates in its home country, for example, a cell phone service provider based in US moving to India to provide the same service. वहाँ पे cell phone service provider है like let's say Airtel और Vodafone, ये सारे होते हैं service provider. US का सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिया में अपना बेस बनाया, यहाँ पे कंपनी चालू कर दी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% और मोर इन शेयर होल्डिंग. Then it is called as horizontal. उनका एक बिजनेस है, same business extended to India, so it's a horizontal FDI. Vertical, going up or down. The investor establishes or acquires a business activity in a foreign country which is different from the investor's main business activity, yet in the same supplement, in a way supplement its major activity company. For example, vertical growth या acquisition किसको कहते हैं? For example, if a person is manufacturing a cell phone but purchasing the batteries from the other company, gradually decided to acquire that company which is manufacturing the batteries. So that is called as vertical FDI. For example, an automobile manufacturing company may acquire an interest in a foreign company that supplies parts of raw material required for the manufacture of company. So if I am a manufacturer of automobile, मेरा एक spare part मैं किसी foreign company से ले रहा हूँ, मैंने उस कंपनी में ही 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, it is vertical FDI. Conglomerate, an investor makes a foreign investment in a business that is unrelated to its business in its home country. कुछ unrelated है as an investment, मैंने दूसरे एक business में 10% से ज्यादा shares ले लिए. Two-way direct foreign investment. Two different investors from two different countries acquire such shares in the organization of each other at the same time. A company of let's say UK invested some amount in my company, let's say 20%, and I purchased 20% shares of that company. It's a two-way FDI, foreign direct investment. But वो जो पैसा उधर से इधर आया, that is FDI. मैं जो invest कर रहा हूँ, that is not FDI, it is outgoing money. FDI means incoming amount in our country. Second comes foreign portfolio investment, FPI. ये FPI क्या होता है? Now let's see. An investment made by the investor of a specific country, home country, in the shares etc. of the company of the other. Apparently the same दिख रहा है. Investment for a short period, a very small percentage of share held, mainly interested in short-term gain, immediately moves to the other countries in case of not expecting good returns. फर्क इतना है कि यहाँ पे फर्स्टिंग 10% वगैरह कुछ नहीं, whatever amount I have I can invest first. My goal is to get the short term returns. अगर मुझे शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल गया I will sell it out, no long term objective. और अगर फ्यूचर में ये मार्केट डाउन जा रहा है, इमीडिएटली पैसा निकाल लो. लेट्स से इंडिया से पैसा निकाला, लेट्स अज्यूम श्रीलंका में डाल दिया. सो इट इज जस्ट फॉर गेनिंग द अमाउंट, इट इज नॉट एट ऑल फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. दैट इज कॉल्ड एज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. So this is the difference between FDI and FPI. We have already discussed, so I'm not going in detail. It is given in the module also. But the thing we should remember is, in case of FDI, the investments are made to gain some control. It is for long run. FPI, it is for short run, just for getting a short period gain, nothing more than that. So that was all about FDI and FPI. Now the next question comes, why investment abroad? पैसा मैं बाहर इन्वेस्ट क्यों करूं, या बाहर वालों का पैसा मैं क्यों लाऊं? Let's discuss this point. Why to make an investment abroad?
So there are variety of reasons why someone invests the amount abroad. Let's see. Excessive money. Oh, I wish कि मेरे पास हो. Excessive money है. हर कोई कहता है यार इतना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए ना, कुछ भी कर सकते हैं. So sometimes the business houses or even an individual may have excessive amount to invest abroad. So that could be a reason. Special features of a host country. There are some special features of a country, that is the host country, which attracts the others to come for an investment in your country. Increasing interdependence. Interdependence तो बढ़ने वाला है, वो बढ़ता ही रहेगा. So for that matter, again, I need to invest. For example, मेरा raw material supply इस specific country से ही हो सकता है. So I don't have any option but to invest in that country. So that can also be the reason. Now, the next reason is subsidiaries, etc. abroad. If I have a company which is subsidiary and which is situated abroad, I have to spend the amount. So I have to send some amount. So that is again a reason why the amount goes abroad. Difficult to take direct partnership. मुझे directly partnership उस country में allowed नहीं है. मैं organization applied but rejected by government. So gradually I can invest some amount in that country. That is also one option or one reason. Control on foreign skills. जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 30-40%, वो जो स्किल बेस्ड कंपनी है उस पे मेरा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है फॉर माय बिजनेस. सो दैट कैन आल्सो बी अ रीजन. फ्यूचर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन फर्म्स. ग्रेजुअली आई एम एक्वायरिंग 3%, 5%, 10%, 20% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी व्हिच इज सिचुएटेड अब्रॉड. तो मैं पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, फाइनली आई एक्वायर दैट कंपनी. सो दैट कैन आल्सो बी अ रीजन. रिस्क डाइवर्सिफाइड इन अदर कंट्रीज. मैंने मेरा पैसा अलग अलग कंपनीज में अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करके रखा है. सो इफ द इकोनॉमी ऑफ कंट्री ए गोज डाउन, मे बी बी विल गो अप. सो रिस्क इज रिड्यूस, डाइवर्सिफिकेशन. ग्रेजुअली क्रिएटिंग अ ग्लोबल मोनोपोली. मेरी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, आई हैव अ मोनोपोली इन माय कंट्री, देन ग्रेजुअली आई शिफ्ट टू अदर कंट्रीज आल्सो. आई विल स्टार्ट एक्वायरिंग स्मॉल कंपनीज एंड आई विल क्रिएट अ ग्लोबल मोनोपोली. फॉर दैट मैटर अगेन आई हैव टू इन्वेस्ट अब्रॉड. Taking advantage of small but rapidly growing markets. There are some markets which are apparently small but having a potential to grow at a very high rate. So better to invest in that country. So that is again a reason why money floats outside. Entering into the market having tariff bans, etc. Sometimes direct entry is not allowed. Tariffs are there, bans are there. So invest in their home countries, that is home companies, and get the advantage and skip off these bans and tariffs. Stability in the host country. Stability है तो in that case I can invest some amount there. Maybe in a long run I will get good returns from that country. Open environment for investment in host country. Suddenly an underdeveloped country or relatively not that much developed country is opening its boundaries. It is inviting us for investment and we are getting very much good tax benefits also. Better to invest. Maybe in future it is going at a rapid rate. Control on the raw material in the host country. Some raw material is supplied by the companies in which I need to have my hold, which we have already discussed. Getting access to minerals, etc. of the host country. Now, mineral is a God gift. It may not be available in my country, so I have to invest there so that minerals supply will be there. Tax benefits we have discussed. Unavoidable investment to maintain the position. Sometimes we have to maintain our position in that country, so we need to make some investment in some companies called as FDI. हाई जीडीपी एक्सेट्रा इन द होस्ट कंट्री. उनका जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, पोटेंशियल अच्छा है, इन्वेस्ट कर दो. इन नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट गुड रिटर्न. सो दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई द अमाउंट गोज अब्रॉड, व्हाई द कंपनीज और एंटिटीज इन्वेस्ट देयर अमाउंट अब्रॉड. नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स व्हिच आर सीन और व्हिच आर एनालाइज्ड बाय द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर क्या क्या देखते हैं किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले. इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स. फर्स्ट, मार्केट सीकिंग एफडीआई. मुझे अगर मार्केट शेयर चाहिए तो मैं क्या क्या देखूंगा. मार्केट साइज एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ मार्केट ग्रोथ. मार्केट कैसे ग्रो हो रहा है, उसमें जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस कंपनी का शेयर कितना है. एक्सेस टू रीजनल एंड ग्लोबल मार्केट्स. यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ग्लोबल मार्केट में एज वेल एज वहां का रीजनल मार्केट कितना कैप्चर कर सकता हूं. कंट्री स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट. एग्जैक्टली वो कंज्यूमर क्या चाहता है. फॉर एग्जाम्पल मे बी देयर इज अ कंट्री इन विच वो इतने पैट्रियटिक है कि वो कहते हैं कि नहीं हम बाहर वाला प्रोडक्ट लेंगे नहीं. इट मींस द गेट्स आर ऑलवेज क्लोज फॉर माय कंपनी बीइंग अ फॉरेन कंपनी. सो इनडायरेक्टली आई कैन एंटर इन दैट कंट्री बाय इन्वेस्टिंग 20-30%. उसी कंट्री में किसी से पार्टनरशिप कर लेता हूं, आई कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट.
and the structure of market also, whether it is growing or not. Second economic determinant could be resource or asset seeking FDI. मुझे अगर वहां पे रिसोर्स या एसेट लेना है तो मैं क्या चेक करूंगा? रॉ मटेरियल्स, ये मेरा रिसोर्स है, रॉ मटेरियल्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लो कॉस्ट अनस्किल्ड लेबर है वहां पे अवेलेबल, तो वो भी मुझे फायदेमंद रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर है लेकिन उतना हाई डिमांड नहीं है, लाइक साउथ अफ्रीकन कंट्रीज आर देयर जहां पे वेरी लो कॉस्ट पे आपको लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों मिल जाते थे। टेक्नोलॉजिकल, इनोवेटिव एंड अदर क्रिएटेड एसेट्स, फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम्स, कुछ कंपनीज है ऑलरेडी जिनका ब्रांड नेम सेट है तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टार्ट गेनिंग द प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस ले लो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी तो उसका भी हमें फायदा हो सकता है। सो these are all इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो हमें मोटिवेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी मींस गवर्नमेंट पॉलिसी, वहां पे पॉलिसी कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल स्टेबिलिटी, रूल्स रिगार्डिंग एंट्री एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एफिलिएटेड पॉलिसी, फॉरेन affiliates, policies on functioning and structure of market, for example regarding competition, merger, वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मर्जर एक्विजिशन कितना अलाउ करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट अलाउड है, मोनोपोली क्रिएट हुआ तो उनके एक्ट्स क्या है, एवरीथिंग आई हैव टू गो थ्रू कॉल्ड एज पॉलिसी फ्रेमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री। इट आल्सो इंक्लूड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एफडीआई, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी क्या है, trade policies and coherence of FDI and trade policies, tax policies etc. So FDI के बारे में उस कंट्री में क्या स्टैंड है वो भी आपको देखना पड़ेगा। Any special taxes for foreign collaboration, that also we have to see, or maybe some subsidies are available. So policy framework. For efficiency seeking FDI, cost of above physical and human resources and assets including adjustment for productivity, other input cost, ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे ओवरऑल कॉस्टिंग कितना जाता है, हाउ मच आई हैव टू पे फॉर ऑल दिस। मेंबरशिप ऑफ कंट्री इन रीजनल इंटीग्रेशन एग्रीमेंट व्हिच कुड बी कंडक्टिव ऑफ टू फॉर्मिंग रीजनल कॉर्पोरेट नेटवर्क, जिनमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, हाउ द नेटवर्क इज पॉसिबल, उनका वहां पे पॉलिटिकल स्टैंड कितना है, हाउ मच इज ब्रांड नेम and overall acceptability over there, that also I have to check. Business felicitation, ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पे बिजनेस मेरा कैसे ग्रो होगा, what are the facilities regarding business, investment promotion including image building, investment generating activities, investment facilities, services etc. For example, a company acquired by foreign company, हमारे यहाँ की कंपनी अगर फॉरेन कंपनी ने एक्वायर की तो वहां पे प्रमोशन कैसे होगा, लोग उसको कैसे देखेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू गेट द ब्रांड नेम इन देयर मार्केट, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, हसल कॉस्ट रिलेटेड टू करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, वहां पे कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्ट्रांग है, एनी करप्शन इज देयर जिसमें मुझे पैसा नहीं डालना है, सो मे बी आई विल नॉट गो इन दैट कंट्री, ये भी चीजें चेक करना जरूरी है। सोशल एमिनिटीज लाइक द बाइलिंगुअल स्कूल्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये भी चेक करना पड़ेगा बिकॉज माय वर्कर्स और माय मैनेजमेंट पीपल विल गो देयर, वेदर इट इज अ गुड country to get settled, school facilities, medical facilities, standard of living, everything I have to check. Business felicitation. Factors in the host country discouraging the inflow, तो ये हमने देखा क्या क्या चेक होता है। Now we'll see what exactly discourage the investors. Of foreign investment our infrastructure lacks, infrastructure facilities नहीं है, load shedding हो रहा है, क्यों आएंगे वो यहाँ पे? High rates of inflation, inflationary situation है, balance of payment negative है, import बहुत है, export नहीं हो रहा है यहाँ से। Poor literacy and low labor skills, rigidity in labor market, bureaucracy and corruption. Workers are not skilled, even they are not skilled, still they are having the position that they can bargain the things. Politically it is not good, so n number of reasons are there which demotivates the foreign investment to come in our country. Modes of FDI can be, अब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो in which form he can make the investment, FDI के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। ओपनिंग अ सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी इन अ फॉरेन कंट्री, सब्सिडियरी कंपनी स्टार्ट कर दो। इक्विटी इंजेक्शंस इनटू ओवरसीज कंपनी, इंजेक्शन मींस इनपुट, तो इक्विटी शेयर्स में पैसा डाल दो किसी रनिंग कंपनी में। एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी 20% से ज्यादा, और इवन होल्डिंग सब्सिडियरी करना है तो 51% या मोर देन 50% टू बी इन्वेस्टेड। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, उनके साथ एक्वायर करो, मर्जर करो या एक आध कंपनी एक्वायर कर लो। Joint venture with a foreign company, greenfield investment, establishment of a new overseas affiliate for freshly starting production by parent company. Parent company वहां पे जाके एक new company form करेगी along with the others or maybe individually, that can also be done, greenfield investment.
So these 6 forms are given in which the FDI can work. Now what are the benefits of FDI? बाहर से पैसा आने की वजह से जहां पैसा आता है होस्ट कंपनी उनको क्या फायदा होता है, एंड बेस कंपनी दैट इज द बेस कंट्री जिन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पे क्या फायदा होता है. फेयर कंपटीशन इन द होस्ट कंट्री, बाहर से पैसा आ रहा है, क्वालिटी वाइज इट इंप्रूव्स एंड कंपटीशन कैन बी जनरेटेड. मोर कैपिटल इनफ्लो, ऑफ कोर्स पैसा आएगा तो बिजनेस और बढ़ेगा. इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ होस्ट कंपनी, पैसा आएगा बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली. अट्रैक्टिव रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अगर देखती है कि यहाँ पे अच्छे खासे लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स या उनके लिए कुछ फैसिलिटीज भी दी जा सकती हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पैसा आया, न्यू कंपनीज गेटिंग स्टार्टेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. यूज ऑफ एक्सेस लेबर ऑफ होस्ट कंपनी, होस्ट कंपनी वाज हैविंग एक्सेसिव लेबर तो उसका यूज हो जाएगा. दे वर आइडल टिल नाउ, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनीज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, कंपनीज बढ़ेगी तो उनको भी काम मिलेगा. गुड वेज रेट फॉर स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल कंपनीज जब आती है दे रिस्पेक्ट द स्किल्ड वर्कर्स, उनका वेज रेट भी बढ़ सकता है. Better access to the international market, I can enter in variety of countries and I can go global also. And जो जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उनको भी इंटरनेशनल एक्सेस मिल जाता है वो अलग से. Skill development, when the international company enters in, it will give training and the laborer will be skilled. Best use of resources, whatever resource available in that country can be utilized by the investor because that is investing for the profit purpose, so it will of course make the best use of resources. New tax revenue for host company, new companies आएगी, income बढ़ेगा, taxes बढ़ेंगे. Lowering the prices due to large scale production, as the companies are entering in, जो small businesses थे वो अभी बड़े हो जाएंगे, large scale production will reduce the overall cost and selling price. Positive balance of payment, पैसा आ रहा है, companies बढ़ रही है, export बढ़ेगा, balance of payment will be positive. May challenge the local monopolies, कभी कभी छोटे छोटे ग्रुप्स मोनोपोली कर लेते हैं. It is not good for the market condition. When the newcomer enters in, maybe he will crack that monopoly and a new market can be developed. Better work culture can be introduced because the exposure is more, so better work culture. The foreigners will come in our company, then automatically whatever they have experience, whatever exposure they have got can be implemented. Introducing a new concept in the host country. Many times some kind of concepts are introduced which were not there in the host country. This new concept may create a good culture also, may give a good profit also, and growth rate will increase. So these are all the points which are in favor of FDI. But of course there are some problems also which are coming along with these advantages. Capital intensive method leads to unemployment. Earlier the production was labor oriented. मेरे कंपनी में 200 वर्कर्स काम कर रहे थे. When someone invested in my company, उन्होंने कहा अभी ये वर्कर्स नहीं चाहिए, मशीन्स लेते हैं, हम पैसा देंगे. I was happy. Machines आ गए, so out of 200 now only 40 workers are required. So it is unemployment for 160 workers in this case. May ignore poor countries. It should be a fair opportunity for all the countries, but investors तो भाई profit के लिए काम करेंगे. Why will they go to poor countries or not having resources? Host country government may become weaker. हो सकता है कि investors इतने strong हो गए कि government is not in a position to have its own conditions now. Long term में हो सकता है. Investment from domestic borrowing defeat the purpose. अगर A Limited US में है, it wish to make investment in country A. उसने कंट्री ए से ही लोन लिया और वहीं पे इन्वेस्ट किया, इवन दो दैट कंपनी इज पेइंग द इंटरेस्ट, तो पर्पस डिफीट हो गया. यही का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, देयर इज नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो इट विल नॉट सफिश द पर्पस. अब ओवर रिलायंस ऑन एफडीआई इज रिस्की. सडनली अगर उन्हें पैसा निकाल लिया, दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट ओनली. सडनली इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन, देन व्हाट विल यू डू? सो ओवर रिलायंस इज आल्सो नॉट गुड. Only routine jobs are outsourced. Many times skilled or the things which are actually working as brain are not outsourced. These are done by the home countries or the companies at home countries, but only routine job is outsourced. That's the problem. Ignoring low profit giving but important products or projects. Some projects are important or products are also important like the basic needs, but उसमें profit नहीं है तो कौन invest करेगा? That can also be ignored. Unethical activities of foreign investors, so that can also be a problem कि ethically you are not doing the things as you are working in other country, maybe you are not following their ethics and rules and regulation. Possibility हो ही सकती है.
Risk to local industry, foreigners are coming in, so local domestic industry will get affected. May affect the local market of investing country too. अगर उन्होंने यहाँ का कल्चर चेंज किया या यहाँ पे प्राइसेस इतने डाउन कर दी तो लोकल मार्केट अफेक्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स विल गो डाउन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स ऑफ होस्ट कंट्रीज, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे होस्ट कंट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी emotional investment in them. It is just the amount invested, you don't have any option. So exploitation is possible. Possible threat to the national security also. Over reliance on this kind of investment is not good from security point of view. Exploitation of natural resources, we already discussed, they don't have any emotional attachment with our country. Risk of dual economy. Risk है क्योंकि एक तरफ कैपिटलिस्ट और एक तरफ गवर्नमेंट, इनमें हमेशा ही वॉर चलता रहेगा, सो ड्यूअल इकोनॉमी में गेट जनरेटेड. एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओवर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को इतने टैक्सेस मिल रहे हैं दैट इट कैन नॉट रन आउट ऑफ इट नाउ, सो इट हैज टू follow the terms and conditions of investors. That can also be a risk in a long run. So these are the problems with FDI. So we have seen how the amount comes in, what exactly FDI is, what exactly FPI is, उसके advantages and limitations. Now the next question comes, India का status क्या है? What exactly is happening in India? FDI in India, selective approach after independence. FERA 1973 allowed up to 40% foreign investment in joint ventures. In 1980s, more liberal approach was taken and many items added to open general licensing (OGL) for import. So gradually, market is opening, or market was opening for the investors. In 1991, the new reforms were introduced and further steps to make India more compatible with the other countries. Now we are talking about 1991. The government initiatives such as automatic approval for FDI, so licensing or permission, so many documents, सब कुछ बैन किया, और अच्छा है कि FDI को सीधा एंट्री दे दिया. Simplification of procedure helped the FDI rapidly. Enactment of Foreign Exchange (FEMA) Foreign Exchange Management Act, passing of the SEZ Act in 2005, supports to mergers and acquisition and greenfield investment and encouragement to foreign technology collaboration agreement are few such measures. So FEMA आया, उसके बाद SEZ is allowed. SEZ में आप foreign investment maximum 51% तक कर सकते हो. Due to that, huge amount was flowing towards our country. World Investment Report 2016, India ranks as the 10th highest recipient of FDI globally in 2015, receiving $44 billion of investment that year compared to 35 billion in 2014. So top 10 में पैसा लेने वाले हो गए. I wish ये पैसा आने के बाद अच्छा कमाने वाले भी जल्दी हो जाए. So top 10 में at least FDI investment में तो आ ही गए. India has also moved up by one rank to become 6th most preferred investment destination. Yes, that can be a good news for our country. FDI investment India received during April to September 2016 rose by 30% year on year to $21.6 billion. During the period, the service sector attracted the highest FDI equity inflow, that is $5.29 billion. Followed by telecommunication $2.79 billion and trading $1.48 billion. So such a good numbers, we are getting good investment, means the other countries and their government and investors are assuming that, are knowing that the market of India is growing. So it's a good opportunity for every one of us. Also, India received the maximum FDI equity inflow from Mauritius $5.85 billion, followed by Singapore, Netherlands, Japan and USA. So this is what is the exact status of FDI right now. In India, foreign direct investment is prohibited in the following sector. कहाँ पे नहीं करना है prohibition? Lottery business including government, private lottery, online lotteries, etc. Gambling and betting including casinos, cheat funds, nidhi company, trading in transferable development rights, real estate business or construction of farmhouses. यहाँ पे manufacturing of cigars, then cheroots and all these tobacco products. Activity sectors not open to private sector investment, for example atomic energy and railway operations other than permitted activities. Like just now metro
is given to the private hands, but for operational purpose only and construction. After all, it's a government undertaking. Then overseas, now this was all about the amount coming into India. Are we investing somewhere? Yes, we are also investing. Overseas direct investment made by Indians. Now I am talking about outflow of our investment. Outward foreign direct investment, OFDI, from India stood at US $1.86 billion in the month of June 2016. The overseas investments have been primarily driven by resource seeking, market seeking and technology seeking motives. क्यों किया investment? Resource seeking, we want raw materials, तो वहां पे gold आता है क्या देख लेते हैं. Market seeking, we wanted some market share, so investments were made. And technology seeking, we wanted some technologies to come into our country, so ये भी एक reason हुआ. Many Indian IT firms like Tata Consultancy, TCS, Infosys, Wipro, Satyam acquired global contracts. Satyam means now IT Mahindra IT. Global contracts and established overseas offices in developed economies to be close to their key clients. So they started their main head offices also or branch offices in such countries. Indians can make the external investment in all the areas excluding some restricted areas. The government has simplified the procedure and has reduced some control. So government is also supporting for our investment abroad. The annual overseas investment ceiling to establish joint venture and wholly owned subsidiaries has been raised to US $1,25,000 from $75,000. The RBI has also relaxed norms for foreign investment by Indian corporate by raising the borrowing limit. So you can borrow from RBI, that is from banks also. RBI has given special permissions that you can borrow amount from banks and you can invest abroad, because unless you invest abroad, first, the foreigners will not come for investment in our countries. Second, whatever development is happening abroad, uska benefit bhi hame nahi milega if we are not investing somewhere else. That is why overseas direct investment by Indian companies or investors is also going good, as we have seen. So in this way we are coming to the conclusion of this chapter. We have seen what is chapter means unit. What we have seen in this unit, the unit has explained us in detail how the inter-country investments are playing an important role in today's international market. How FDI, FPI are playing an important role. So here ends this unit, and as well as this chapter also named international trade. So we have seen how international trade exactly takes place, how government controls it and how the money flows. That was given by the last chapter, last unit of the chapter, that is international capital movements. Thank you.